वेलकम। सो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम एनसीईआरटी के क्लास 12 की अनसॉल्व्ड वाली सेक्शन करेंगे, चैप्टर नंबर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, राइट? तो एक्सरसाइज करते हैं आज एंड लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सीधा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, वो कंपेयर टू जो हमने क्लास में किया या फिर लाइव सेशंस में किया उससे तो बहुत सिंपल है, ठीक है? Storage battery of a car has an EMF of 12 volts. If the terminal resistance of the battery is 0.4 ohms, what is the maximum current that can be drawn from the battery? So this is simple. Okay, you have got a storage cell. So तुम्हारे पास एक battery है. So I've got a battery, and that battery has got a. So you have got a battery. So connect more than this. A storage battery has a car. EMF is 12 volts. And if the terminal resistance of the battery is 0.4 ohms, so 0.4 ohms is the terminal resistance. What is the maximum current? So he is saying this internal resistance as 0 ohms. So nothing is being mentioned about the internal resistance, and therefore I am considering it as 0. And simply you get the current from here, and I is equal to 12 upon 0.4, and that will be nothing but 120 by 4, and that is nothing but 30 amperes. So 30 ampere is the current that will come out, right, from this cell, okay, the battery. So simple it was. Let's do the next one. Now let's see this. A battery of EMF 10 volt and internal resistance 0.3 is connected to a resistance, okay. So you have got a battery, hold on. So you have got a battery. चलिए मेरे पास एक बैटरी है, जिसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है. So I've got a battery of EMF 10 volts, EMF है मेरे पास, and internal resistance is of 3 ohms. Good, I've got 3 ohms internal resistance is connected to a resistance. Very nice. So this is connected to R. So connected to a resistance. Okay. If the current in the circuit is 0.5 ampere. So 0.5 ampere current is flowing. What is the resistance of the resistor? Okay, so you can take a loop. If you take a loop, that I'm going to write it as -10 plus capital R into 0.5 rather, and then you have got another resistance, and that is 3 into again 0.5, and that ends the loop. That is equal to 0. So therefore, what I can say over here is 0.5 R is equal to 10 minus, this is 15, that is 1.5. And therefore my R will be nothing but 10 minus 1.5, that is 8.5 divided by 0.5. So you can remove this thing, and therefore you will be left with, so I am going to cut it by 1, 35, and there is 7. So I will have a 17 ohm resistance in the terminal. So 17 ohm resistance है क्या? So I have got 17 ohms, yes, 17 ohms answer है. Or what is the terminal velocity of the battery when the circuit is closed? Now terminal voltage, okay, terminal voltage. So let us find the voltage. If you want to find the voltage, then you are talking of this part, and V is nothing but I into R, and therefore हमने I अभी निकाल दिया हुआ था हमारे पास 0.5, and here is my R which is 17, and that is 6.5 volts. You are going to get it as 6.5 volts. 6.5 नहीं 6.5 क्यों, 170, so 8.5. Right. Check the result please. 8.5. 16, 170 divided by 2, that is 85. 85, yes, you're going to get 85. So 8.5 volts. 85 और एक decimal आ जाएगी. So this is the terminal voltage, correct? Okay. तो एक ये part हो गई. Sir, right, always pause it and write it down, okay? Now what next? What I have is this thing. Okay, so you have got 3 resistances, 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series. What is the total resistance of the combination? Okay, this is simple. If the combination is connected to a battery of 12 volt and the negligible internal resistance, obtain the potential drop across the each resistance. So that is once again simple. So let's try this one. Okay, so let's do this one. So ये वाला करते हैं. अगर मैं ये करता हूँ तो चलिए. Now let's work it out. So I have got 3 resistances. So 1, 2, and 3, and the values are 1 ohm, 2 ohm, and then 3 ohm.
So हमारे पास 3 है, connected in series. Okay, I have connected it in series. What is the total equivalent resistance? So R equivalent is nothing but V is equal to मैंने series में लगाया तो R1 plus R2 plus R3 and you simply add them up. These are very basic questions, right? So this is 6 and 3 and 2 5, 5 and 1, 3 and 2 5 and then 6 ohms, right? Good. And if the combination is connected to a battery of 12 volt, now I am connecting this combination with a battery of 12 volts, right? Okay, so I am connecting 12 volt and with a negligible internal resistance, so it has got negligible. Obtain the voltage drop across it. Okay, so that means he is asking for what? He is asking for this. He is asking for V1, he is asking for V2 and he is asking for V3. हमको पता है वहीं का voltage, वहीं का current और वहीं का resistance. So that's the simple formula of Ohm's law, right? तो उसी जगह का आपको voltage की बात करनी है. So if I have V is equal to IR, तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो 12 volt is the voltage of the entire circuit. So what I need is, what we have to take is I पूरे सर्किट का, and that is I, and पूरे सर्किट का R equivalent लेनी पड़ेगी क्योंकि पूरे सर्किट का वोल्टेज है तो पूरे सर्किट का करंट और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, and therefore 12 is equal to I into 6. This will cancel out and I is nothing but 2 amperes. So this is the first part of it. No, this is not the answer rather, right? This is the first part of it basically. Okay, oh no, right? So this is the first part of it. Then what do you have? Next, these resistances were connected in series. तो मेरे पास ये सब सीरीज में लगे हुए थे. तो ये 12 की थी और ये 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm थी. So I just calculated current and that is 12 by 6 and that is equal to 2 ampere. Got it? Okay. Now मेरे पास 12 ampere. What is the voltage of this first resistance? If you look at the voltage, and let us say this as, let us say this as the voltage over here as V1. So वहीं का voltage, वहीं का current और वहीं का resistance. Look at the formula. So current I जो है 2 ampere, वो तो सब जगह flow कर रही है क्योंकि series में current same रहती है. सब जगह में current remains the same. But the big thing is what about this V1? V1 कहाँ का voltage है? 1 ohm का. So V1 1 ohm का voltage है. तो V1 I is equal to 2 and R1. What about R1? And if you look at R1 is 1 ohm. यहाँ पे 1 ohm डाल देंगे हम. और अगर मैं 1 ohm डाल देता हूँ, that will give rise to V1 which is equal to 2 volts. Clear? Exactly in the same way, अगर मैं V2 निकालना चाहूँ, V2 is equal to I into R2. तो V2 मुझे पता नहीं है, लेकिन करंट पता है 2 है, लेकिन वहीं का रेजिस्टेंस कितना है? So वहीं का जहाँ का आपने 2 लिया है, 2 एम्पियर करंट लिया है, so उसका रेजिस्टेंस है 2. So that will give rise to nothing but 4 volts. And if you want to find this is your V2, and if you want to find your V3, so V3 is once again I into R3 now, and 2 ampere into the current. What is the resistance? Now the resistance is 3, and that will give rise to 6 volt. So here we have my answer. For the first resistance you have got 2 volt, for the second resistance you have got 4 volt, and for the third one you are going to have 6 ohms. But सबसे इंटरेस्टिंगली सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है. अगर आप ठीक से देखें 2 + 4 + 6 इन ब्लॉक्स वाले को जोड़ता हूँ, so that will give rise to 12 volt, and that is what is my total voltage. Now it is very absolutely clear that in series the voltage gets divided. Now look at the concept. Okay, so कुछ इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन को करते हैं 3.3 का पार्ट A and पार्ट B. अच्छा, if a combination is connected to a battery, so this is what is done. Good. Now pause the video, write it down. Okay, आगे करते हैं. नेक्स्ट कौन सा है ये? 3 resistances 2, 4 and 5 are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? So very easy, sir. So if the combination is connected to a battery of 20 volt with a negligible resistance, determine the current through each resistance and the total current drawn from the battery. Okay, so total current drawn from the battery. Okay, fine. So you have got, so what I have got is, right, what I have got now is, I have got 3 resistances. So one is your 2 ohm, another one is your 4 ohm, and another one is your 5 ohm. So I have got 3 resistances. Just have a look. Now, सबसे पहला पार्ट में उसने पूछा है find R equivalent. Okay, so R equivalent is equal to basically 1/R के साथ होती है. तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख के, और सारा नहीं मिल जाता यार इसमें. Shit यार. चलो कोई बात नहीं. और एक बार बना लेते हैं. Let's use this one. Hold on. Let's use this one.
तो इसमें हमारी जो डेटा है वो उड़ेगी नहीं, राइट? नाउ हैव अ लुक। सो यू हैव गॉट दिस ओवर हियर, ओके? तो क्या हुआ ना, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 3 रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में लगी हुई है, कंबाइंड इन पैरेलल। सो फटाफट लगा देते हैं तीनों को पैरेलल में। अभी ये फिगर जो है वो उड़ गई थी, नो प्रॉब्लम, और एक बार बना लेते हैं। सेकंड पार्ट में वो भी लगा देता हूँ मैं, 20 वोल्ट्स लगा हुआ है। सो लेट अस कनेक्ट अ 20 वोल्ट ओवर हियर एंड यू हैव गॉट 2 ohm, you have got 2 ohm, 4 ohm and how much? You have got 5 ohms. So ये 3 है हमारे पास। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज विल रिमेन सेम एंड दैट इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये सब 20 वोल्ट है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। चेक कर लो, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके? Now the first part he is asking about R equivalent. So 1 by R equivalent is equal to 1 by कितना लिखूँ, 2 plus 1 by 4 plus 1 by 5, right? So 2, 4 and 5, correct? Okay. So 2, 4 and 5. So solve कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 by R equivalent is equal to, take LCM, and LCM is 20. So this will become 10. This will become 5, and this will become 4. And that will give rise to 10 plus 5, 15, that is 19 by 20, and your R equivalent is nothing but the reciprocal of it, and that is 20 by 19 ohms. So you can check your answer, right? So this is my R equivalent if they are connected in parallel. Okay? Now once it is connected in parallel, then the next step is you need to find what? Determine the current through each. Okay? So हमको क्या करनी है, हमको तीनों की करंट निकालनी है। बहुत अच्छी बात, तीनों की करंट निकालेंगे हम। तो दिक्कत क्या है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, सिर्फ करना क्या होगा, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना होगा, वहीं का वोल्टेज, वहीं का करंट और वहीं का रेजिस्टेंस। ये 3 चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वहीं का वोल्टेज, वहीं का करंट और वहीं का रेजिस्टेंस। एंड इफ यू डू दैट, नाउ व्हाट यू विल फाइंड, सो इन द फर्स्ट केस दिस वन, इफ आई कंसीडर दिस वन, सो वहीं का वोल्टेज इज इक्वल टू योर 20, करंट आई डोंट नो, लेट अस कॉल दिस I1, so let us call this I1. Resistance I know, and that is 2, and therefore here is my first current, and that is equal to 10 ampere, 20 divided by 2, 10 ampere. Now go to the second one. If you go to the second one, again V is equal to IR, so voltage remains the same, parallel में लगी हुई है, और current मुझे पता नहीं है, let's call this I2, and the resistance over here is nothing but 5, and therefore here is my answer, which is nothing but 20 by 5, and that will produce 4 amperes. Now look up, okay? And the last one again V is equal to IR, and again we have got 20 parallel में लगी हुई है, current का पता नहीं, that is I3, and the resistance over here is nothing but 5 ohms, and therefore I will get my current at I3 to be as 4 ampere, and therefore these are the, hold on, so एक 5 डाल, 2 डाल दिया, एक 4 छूट गया मेरा, so 4 एक डाल देते हैं यहाँ पे, 4, अगर मैं 4 लेता हूँ यहाँ पे, oh sorry यहाँ क्यों कर रहा हूँ, हाँ भाई sorry, clear, hold on, yes, and 1, and this is 5, so this is 4, and if I divide it, the fourth 5 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 4, and then you have got 4 का नहीं हुआ, 4, so if I divide it by 4, I will get it as 5 ampere. So look at this, so this is the 5 ampere current that is flowing, and you can see that result, right? You can see this is my first answer, first current to the first one, the current to second one and third one. और आपको पता है पैरेलल में जो है ना, पैरेलल में हमेशा करंट जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, पैरेलल में करंट जो है वो हमेशा डिवाइड हो जाती है। उस चीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो, जैसे सपोज आई से V इज इक्वल टू आई आर एंड R आई से R इक्विवेलेंट, राइट? सो इफ आई से R इक्विवेलेंट, इसका मतलब पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी जो करंट है ना वो भी पूरे सर्किट की आएगी, तो इसलिए पूरे सर्किट की तो वोल्टेज दी ही हुई है, but now what we are going to do, we are going to replace this I. So what is this I? So this I into R equivalent, and R equivalent I have got as 20 by 19. So if you see very carefully, this 20 and 20 will cancel out, and the total current is 19 ampere. And interestingly, look at the property, total current I is, look at the above result, 10 ampere plus 4 ampere plus 5 ampere, and that produces sir 19 amperes. देख लो, so एक बात श्योर हो गए हम, पैरेलल में जो है वो करंट जो है वो क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और दोनों को जोड़ने से अगेन यू आर गोइंग द टेक, यू आर गेटिंग 19 एम्पियर। फाइन, सो पॉज कर लो एक बार और पूरा कॉपी कर लो एक बार। फाइन, सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन, और देखते क्या है। ओके,
So at room temperature 27 degrees, the resistance of the heating element is 100 ohms. Okay. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117? Okay, 117 हो गई है, 100 से लेके 117 हो गई है. Given that the temperature coefficient of the material resistance, that is this. Okay, alpha is given to you. Very nice. So there is one format for the resistance, and that is what is it? R is equal to R naught 1 plus alpha del T. So this is the format. Del T is the change in temperature. Alpha is given to you. So alpha is given to you. Alpha is 1.70 into 10 to the power minus 4. You need to write down per degree centigrade. Okay. But the thing is, we have to have two cases over here. So the room at room temperature 27 degrees, the resistance of the heating coil is 100. So at room temperature it is 100, and the temperature when it is 117, the temperature becomes what is the temperature of the element if the resistance is found to be 117. ठीक है, बहुत अच्छा बात. तो what is the temperature? So I need to find this temperature. So if you just work it out, so what I'm going to get is R upon R naught is equal to 1 plus alpha del T. हमको del T चाहिए. So हमको अगर del T चाहिए, so I will say this as 1 by alpha into R minus R naught minus 1, and therefore it is nothing but R minus R naught divided by alpha into upon R naught. So this is my change in temperature. Ligo please. Right on. This is the change in temperature. Now resistance values are given. Okay. So once the resistance values are given, just you put it over there. Right. पहले लिख लो इसको please. ऐसे कैसे लिख लो. ठीक है. Now what is saying now? He is saying now the resistance has become 117, but earlier it was at room temperature it was 100. So it was 100. So that is 100 into this 1.7 into 10 to the power minus 4. And if you solve this, मैंने solution किया इसका, right? If you solve this, मैंने solve किया इसका, and if I solve this, I will get 1000. So I will get 1000, right? Change in temperature, right? 1000 degrees बोल सकते हो. Okay, so 1000 I am going to get. That is change in temperature. Okay, और change in temperature ये आ गया, लेकिन मेरे पास पहले कितना था? What was the earlier temperature? So what was the earlier? उससे हम घटा देंगे इस चीज को, and therefore I have got this as change in temperature. So change in temperature को del T is nothing but T2 minus T1, and therefore पहले क्या था? That means your T2. What is the present ना? What is the temperature of the element? So T2 is nothing but del T minus था plus हो गया T1. So पहले मेरा कितना था? 1000. मैंने अभी आया है difference in temperature, और पहले मेरे पास कितना था? 117. So now it is 117. So just subtract it, you will get your result. Right? Subtracting addition, just add it. So this is 1117. So degree centigrade. So this will be the answer. You can check it out. Okay, इसको the answer कहाँ है इसका? So this is centigrade में, मैंने गड़बड़ कर दिया. Centigrade में है. So you don't have to take this room temperature. And that is 27. T1 is 27 actually, not this. Okay, degree centigrade, and that is equal to 1027. Yes, 1027. Right. Check करो. Pause the video और थोड़ा सा note down कर लो please. Okay. Clear? So इस तरह से ये वाला भी एक आसान question था. Right. बोर्ड में ये question इससे question is very popular. Okay. A negligibly small current is passed through a wire of length. चलो डेटा लिखते हैं. Wire of length. कितना length है मेरे पास? Negligible wire of length 15 meter. Now check this out. Please read the question. Okay. So 15 meters है ये मेरे पास. Okay. And a uniform cross section of. अच्छा. Uniform cross section is also being told, and that is what is 6 into 10 to the power minus 7. And the resistance is measured to be as. अरे सब तो बोल ही दिया यहाँ पे 5 ohms. Right? What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? Resistivity निकालनी है. So R is equal to resistivity का एक ही formula हमने पढ़ा है. Rho R is equal to rho L by A. Okay. So if you want to find resistivity, that is R into L into A,
सो सर R दे रखा है हमें 5, L हमको दे रखा है 15, L is 15 and you have got A and A is 2 into 10 to the power minus 7. So you can get your answer, sir. Right? Okay, very nice. So this is your 6.7. A silver wire has a resistance of this much and a resistance of itna at 100 degrees. Determine the temperature coefficient of the silver. So again, you use that one, right? What is it? R is equal to R naught, 1 plus alpha del T, 1 plus alpha del T. Now you need to find this alpha. हमको अगर अल्फा चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? R minus R naught is equal to alpha del T and therefore my alpha is R minus R naught divided by change in temperature. So सारा डेटा दे रखा है आपको कितना डिग्रीज में क्या हो रहा है. A silver wire has a resistance of कितना at 27 degrees and 27.5 degrees and a resistance of 2.5 ohms at 100 degrees. Determine temperature coefficient of the silver. Okay, तो जरा इसको करिएगा. So everything is given over here, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे. सीधा डाल लीजिए डेटा को and that is what is alpha cannot be negative, तो बड़ा वाला ही लेना है हमें. So resistance value is 2.7 minus of 2.7 हो गई and minus of 2.75 resistance of 2.1, I'm sorry, 2.1 and the resistance is 2.7. Okay, so 7 बड़ा 2.7 minus of 2.1. Okay, and the change in temperature, so you can see that change in temperature, that is 100 minus of 27.5. So look at this and you try and solve it straight away. And solve it straight away. Now one thing एक चीज हो गया मेरा यहाँ, that यहाँ पे एक R naught भी आएगी if you see very carefully because it goes inside, okay, and R naught gets divided. Okay, previous problem में भी हमने ये किया था and if you look at this and my R naught is 2.1, so just put it 2.1 and you will get your answer. Clear? ठीक है, इसका जो आंसर है वो भी मैं बता दूं आपको. इसका आंसर है आपके पास what are going to get is very small value here, 0.0039. So 0.0039 degrees centigrade. So this you are going to get it. Okay, fine. चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं फिर करते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया था 3.7. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन क्या है जरा देखिए एक बार. नेक्स्ट वन इज दिस वन. ओके, व्हाट इज दिस? एन हीटिंग एलिमेंट यूजिंग अ निक्रोम कनेक्टेड टू दिस मच वोल्ट draws an initial current of 3.2. Now, which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. Okay, so 2.8 ampere वो settle down हो जाती है. So an heating element using nichrome. Okay, बहुत अच्छी बात. So and settle down to a few seconds at a steady state of 2.8 ampere. What is the steady current of the heating element if the room temperature is this much? Alright, the temperature coefficient of the resistance average. Okay, so alpha is given to you. So here what happens is कि आपको there are two cases actually, right? So you know just now we have seen my alpha to be as alpha. If you calculate alpha is nothing but R1 minus R naught divided by R naught into del T. So here and how this comes वो भी ऊपर में मैंने आपको दिखाया अभी. Now here what happens is I need to find not the alpha but I need to find temperature. Okay, so therefore this can be expressed as del T. Now del T will come out to be as R1 minus R naught divided by your divided by ये नीचे आ गया, so that will be your alpha R naught. Now the big thing over here is these resistances जो previous दो questions आपने देखा था उसमें resistance values directly given थे. यहाँ पे resistance values दिए हुए नहीं है, rather they have given you the condition. Like the first condition having a current of 3.2 and in the second condition is having the current of 2.8. And therefore, if you look at the first one, if you consider your R naught, which is V by I, so I'm going to write it as 230 divided by the first wala current, that is 3.2 ampere. Okay, and if you consider the second one, that is V by I, and that is nothing but 230 divided by the steady state में पहुंच गई है तो वो 2.8 हो गई है ampere. So this is my first resistance and this is my second resistance. Rest all is as just like the previous ones. बिल्कुल पिछले वाला था. सर ये मेरी R naught है, ये R1 है, ये R naught R1 पता चल गया. Alpha is directly given to you. Just put it over there. You will get del T.
और del t, और del t क्या होती है सर T2 minus T1, just put it over here and you will get, and this is 27, so you can put that 27 over here, previous में भी 27 था, 21 27 इसमें डाल के you can get your result. So इसमें अगर मैं इसका रिजल्ट की बात करता हूँ तो where is this question, NCERT का है, yes, तो फिर 840 आएगी ये, so this will come out to be 840 and you put your 840 over here, this side 840, and you have got 27 and you have got your, I don't know what is T2 but this is 27 and therefore just bring it to this side and just add them up, you will get your answer. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कुछ और नहीं था, बस इस प्रॉब्लम में एक ही चीज़ खास बात थी, और वो खास बात ये थी कि देखिए हमारी जो R1 और R2 की वैल्यूज़ है दैट वाज नॉट डायरेक्टली गिवन, राइट, दैट वाज रादर क्या दो हिस्से में देके रखे थे वो, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस. गेट द R1 एंड पुट इट ओवर हियर. बहुत अच्छा बात. सो ये एक बात हो गया. नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन सर, 3.9. so if you go to 3.9, determine the current in each of the branch of the network shown. ओके, सो ये है वो सर्किट. थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ. तो करंट इन ईच एलिमेंट निकालनी है आपको. सो इफ यू हैव टू सी दिस, सो यू नीड ऑफ करंट इन ईच एलिमेंट. तो कोई बात नहीं सर, टेक फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट को देखते ही क्या करेंगे आप, जस्ट स्टार्ट टेकिंग द करंट्स, देन विल सी व्हाट विल हैपन. ओके, सो हमें हर एक ब्रांच का करंट निकालनी है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं, बस दैट्स इट. ओके, सो एक बार चेक कर लीजिएगा. हमेशा व्हीटस्टोन का ब्रिज कभी भी दिया रहे ना, पहला काम वो कर लीजिएगा, ऑपोजिट आर्म्स, दैट इज 10 into 10. क्या 10 into 10 बराबर है किसका, 5 into 5 का? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है. सो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड ब्रिज. सो दिस करंट थ्रू द 5 ohm इज नॉट जीरो. सो वेरीफाइड. सो दिस इज एन अनबैलेंस्ड ब्रिज. ओके, गुड. दैट मीन्स आई हैव टू टेक ऑल द करंट्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर. अगर मैं शुरू करता हूँ तो यहाँ से लेट अस से कि मैं ये I1 करंट ले लिया. सो हियर इज माई I1 करंट. ये I1 करंट यहाँ से चल पड़ा C से और बिल्कुल ऐसे 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 I1 यहाँ तक गया. याद रखिएगा जब तक नोड नहीं आती है करंट डिवाइड नहीं हो सकती है. सो नोड इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ वंस द I1 रीचेज ओवर हियर, इट विल बी स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट. लेट अस से दिस इज I2 and this will be nothing but I1 minus I2. So this is the result, I1 minus I2. Now look at this. अब आगे और बढ़ते, जैसे I2 यहाँ पे आया तो एक करंट इधर में ये नीचे की ओर बोल दिया गया है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन भी दे दिया गया है. तो यू मेंटेन दैट डायरेक्शन. नहीं दिया हुआ रहता है तो कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, राइट. बस सिर्फ एक चीज का याद रखिएगा, एंटरिंग करंट इक्वल टू लीविंग करंट. So this is my I3 suppose, and if this is my I3, then this becomes one what I2, and ये I2 और plus I3 मैं ऐसे जोड़ दूंगा and you will get this, right, I2 plus I3. Now तो यहाँ से मेरी I3 चली गई है और ये मेरी इतनी आ रही थी. So what is this over there, over here now? I1 minus I2 minus of I3. So see this, minus of I3. Have a look. और अगर आप ठीक से देखते हैं आप, so if you see very carefully, ये करंट एंटरिंग है, ये भी करंट एंटरिंग है, दोनों करंट जुड़ के निकल जाएगी. और अगर आप दोनों करंट को जोड़ते हो, I2 and I3 will cancel out when you add this red colored current, this current and this current. Look at the brackets. If you add these two current, I2 and I3 will cancel out and you will be left with only I1. That means the current assumption that we took inside is perfectly correct. Okay, so हर बार right वो अंत में जाके वही starting current बन जानी चाहिए, तभी आपकी रिजल्ट बिल्कुल सही मानेंगे आप, right, the distribution of currents. Then you can take the loop, right, then you can take the loop, okay, whatever direction you wish, right, you can take the loop. Let me write down the equation. Okay, so suppose I take this one, so what I'm going to write, so I'm going to write 10, I'm going to write 10 into the current, that is I1 minus I2, I1 minus I2, then I will come across this 5 into your I3, 5 into I3, and then we have got minus. Yeah, I hope you know why I am putting minus sign, right? 5 into I2, and that will be equal to 0. So the loop is over. Now minus sign because if you see very carefully, the direction of the current and the direction of the loop are same. Therefore plus sign 10k. 5 में अगर मैं जाऊँ घूमता हुआ तो direction of the loop and the direction of the current are once again same. And this is my I3, right? So therefore I am putting plus. But look over here, if I move in this way, my direction of the loop and the current are opposite. So you can see that they are opposite to each other, and therefore I inserted a negative sign. Yeah, so this is the rule that we follow. And this is equation number 1. Solve it, right? Minimize it whatever way you want. Okay.
If you come over here, यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करता हूँ, देखिए मैं फिर करंट के साथ साथ जा रहा हूँ, तो मैं प्लस साइन दूंगा और मैं लिखूंगा 5 इंटू I1 minus I2 minus of I3. So this is the first voltage drop. Then you come down. Now I'm going against the direction of the current. So when I'm going against the direction of the current, it is minus. Now look at this, it is minus, and that is 10 into the current over here is I2 plus I3. So this is I2 plus I3. So ये दो component हमारी हो गई, 5 ohm खत्म, 10 ohm खत्म. Now look at the thing, what happens next? Now I'm going upward, the loop is going upward, but my current is coming down. Oh, so once again negative sign. So once again negative sign, the resistance volt is 5 and the current over here is I3. So look at the voltage drop and you ended where you started. The loop is over, right? The loop is over. जहाँ से आप शुरू करते हैं वहीं पे आप खत्म कर दिए, तो ये मेरी हो जाती है second equation. So this becomes my second equation. Fine. So इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. लेकिन दो इक्वेशन में बात नहीं बनेगी. क्यों? क्योंकि देयर आर 3 अननोन्स, I1, I2 एंड I3. एंड नंबर ऑफ अननोन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस. अगर दो इक्वेशन है, 3 अननोन है, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. I1, I2, I3 3 अननोन है, 3 चीज चाहिए, तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए. सो हियर इज द थर्ड वन. सो यू कैन टेक दिस वन, थर्ड वन, राइट. अब बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं, सर ये वाला क्यों, सर बाहर वाला ले लेते हैं, ऐसे वाला. हाँ, टेक इट, नो प्रॉब्लम, राइट. टेक द थर्ड वन, जैसा भी हो आप, यू टेक इट. Now, what happens is, if you go from inside, I am going with the direction of the current, and therefore the voltage drop in 5 ohm is nothing but 5 into I2. Then you come over here, that is 10 पे आ जाए आप, और current के साथ साथ मैं जा रहा हूँ, loop भी जा रहा है, current भी जा रहा है, same दिशा में जा रहा है. So 10 into I2 plus I3. So this is I2 plus I3 again, plus sign का. And then you come down, and you see it strikes with the negative plate of the battery. So minus 10. So अगर वो positive से टकराता तो प्लस देते. अभी ये negative से टकराया तो माइनस दिया हूँ. And then I go with the direction of the current, and with that current is I1, and that is plus 10 I1. So plus 10 I1, that will be equated with a 0. Your loop is over. And this is my 3 equations, right? Try to solve these equations, 3 equations, you will get your result. Fine. So this is how this will be done. Okay, fine. And that is your 3.12. So potentiometer है हमारे पास एक. So let's read the question first. मेरे पास potentiometer है, arranged एक cell है of EMF this much, gives a balance point at this much length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to this point, what is the EMF of the second cell? So what is the EMF of the second cell? ये आपसे पूछा गया. So दो केस है यहाँ पे, right? Just go through it. That's got 2 cases. So in a potentiometer arrangement, a cell of EMF इतना gives a balance condition of length this. So EMF दे दिया हमें. So पहला केस के लिए मेरा जो EMF है, and that is 1.25 volt, where my length is equal to the balance condition is 35 centimeters. In the second case, if the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to, now my L2 is given over here. So this is my L1, this is my L2, and that is 63 centimeter. And what is the EMF of the second cell? So EMF E1 कर देता हूँ और E2 कर देता हूँ, पर E2 मुझे पता नहीं है, but E1 is known to me. So you can check this out. E1 is known to me. And when you talk of this potentiometer, so potentiometer में हमारी क्या होती है? E1 upon E2 is nothing but L1 upon L2. So this is a simple relation. Just data डालिए और आंसर निकालिए. Clear? So E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. Just put the data there, right? तो बोलिए, so 1.5 upon E2, and that will give rise to L1, that is 35, and this is L2, which is 63 centimeter or meter. If you convert it in meter, you get cancelled out, so problem नहीं है. So what is E2 then? So E2 will come out to be as 1.5 into 63 divided by 35. So straight result है. Just good get the calculations, and if you refer to the NCERT book, तो NCERT में आपको ये आंसर मिल जाएगी, ये आंसर मिल जाएगी 2.25. So 2.25 volts का सोल आपने लगाया था. It's basically an application of potentiometer जहाँ पे 2 सेल होती हैं. तो शायद इस बार के सिलेबस में ये नहीं है. Just go through the syllabus, right? So but I solved it. Right? It was there in the NCERT book and I solved it. ठीक है, good. So let's go to the next one. नेक्स्ट क्या कह रहा है, जरा एक बार देखें. नेक्स्ट इज
The number density of a free electron in a copper conductor estimated in example 3.1 is equal. Okay, so number density, that means it is n. So that is, it is n. So n is given as 3.1. 3.1 is the exercise number, sorry. So what we do is घटा थोड़ा सा मिटाते हैं इसको. So this is given to you now. So example n 8.5 into 10 to the power minus 3 per meter cube. Okay. How long does an electron take to drift from one end of the wire of 3 meters? So 3 meters. कितनी समय लगती है? 3 meters. Okay. Long है ये. To the other end. The velocity of cross section of the wire is, the cross section area A of the wire is, so A is equal to कितना? So A is given as cross section area, लिख लो आप प्लीज 2 into 10 to the power minus 6 मीटर में है, बहुत अच्छी बात है ये. And it carries a current of 3 ampere. So current is equal to 3 ampere. So आपको बतानी है कि कितनी देर में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड में पहुंच जाता है. ओके, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कुछ करना नहीं है सर, सिंपल सी बात है. आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. मुझे टाइम चाहिए, तो आई विल पुट इट एज d बाई v. हमारे लिए d कितनी है? हमारे लिए d है l विच इज इक्वल टू 3 मीटर्स. राइट, इतनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी और कितने देर में करेगी, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट t. और वेलोसिटी कितनी है? सो हियर इज माय ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट आई एम गोइंग टू टेक. सो तभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला था कि कितने वेलोसिटी से वो जाएगी. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला याद होगा आपको, ANE. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नॉट ANE बट I is equal to, so एक मिनट रुको, एक मिनट प्लीज. सो दिस so in this case what you going to say, so here पूरा मिटा देता हूँ, पूरा मिटा दूंगा तो क्या. अब हम लिखेंगे I is equal to NEA into VD. So here's my VD which is equal to I upon NEA. So I know all of them. If you see the data, I know N which is equal to 8.5 into 10 to the power 8.5. यहाँ पे मैंने 20, sorry, this will be 28, 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन माइनस में कैसे, so into 10 to the power 28. Okay, very nice. Then we have got this I. हमको ये अरे भाई आगे ऊपर आई होगा, नहीं, एक मिनट रुकिए तो बस. So here I am going to get it as your I is given as कितना, कहाँ गया I? 3 amperes. So it is 3. Now N I am going to say this as 8.5 into 10 to the power 28. Good. E I know, that is 1.6 into 10 to the power minus 7 E, and 10 to the power minus 7 आ गया E. And then the last one, cross section area is given to you, 2 into 10 to the power minus 6. So just try to solve this one. अगर आप इसको solve करते हो, you are going to get your VDS. Let me check this. So you are going to get your VDS. VD आपको मिल जाती है. I have done it. तो अभी मैंने किया था, कहाँ गया VD? 1.1 into 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड. So ये बहुत छोटी होती है, हमने डिस्कस किया डिटेल में, इसी सेशन में डिस्कस किया था कि क्यों ये छोटी होती है. Now just put it over here, time. Here is my length which is 3 meters and divided by 1.1 into 10 to the power minus 4. So you can see the time right in seconds. So second में आप इसको देख सकते हैं, small s. Okay. So you can get your result in seconds. Okay. It is very large value, तो इसको थोड़ा hours में आप convert कर सकते हैं. Okay. So ये एक important बात है. Then what next? So pause the video. कुछ complicated questions है नहीं, right? You can do it simply. Okay. So video pause करके थोड़ा solution लिखिएगा. Now let's do the next one. So let's do the next one. So और कौन सा है? हो गई सारी? Okay. So all done. So this is done. Okay. ठीक है. चलिए. Good practice now, right? जितने भी question हैं, right? Thank you. प्रीवियस सेशन की एक क्वेश्चन बच गई थी हमारी, क्वेश्चन छूट गई थी, दैट इज 3.10. अ मीटर ब्रिज शोन इन द फिगर. सो फिगर इज गिवन टू यू. ओके, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर. नाउ लेट मी शो यू.
So this is a figure which is given, right? A balance point is found to be at इतना centimeter from one end. So you know ये जो जॉकी होती है, इस जॉकी को हमको क्या करनी पड़ती है, स्लाइड करानी पड़ती है इस जॉकी को, एंड यू कैन गेट योर रिजल्ट. ओके, तो स्लाइड कराएंगे. ये फिगर दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा भी कर ले सो दैट इट विल बी क्लियर. ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगी. मीटर ब्रिज है हमारे पास. द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट फ्रॉम ए. So from E, so L is given to you. Okay, fine. Then the resistance S. When the resistance S, so resistance S is given to you, and hold on. So let's have a look. तो resistance S दे रखी है मुझे. कितनी दे रखी है S? So S to be found as 12.5. So 12.5 ohms S ले लिया हूँ मैं. Okay. Determine the resistance R. So ये R निकालनी है मुझे. Determine the resistance R. Why are the interconnections between the resistance of the Wheatstone bridge or meter bridge made up of thick copper steel? So that is later on. First of all, you need to find this R. This R I don't know, but meter bridge is always based on Wheatstone bridge. तो अगर Wheatstone bridge के principle पे ये काम कर रही है, तो इसका मतलब ज़रूर हमारे पास क्या होगी, ऑपोजिट आर्म्स को हम इक्वल करेंगे. सो जैसे R के साथ कौन जाएगी, 100 माइनस L. सो हियर वी गॉट R, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ 100 माइनस L1, सो वट एवर द रीडिंग इज. एंड S के साथ कौन जाती है, S इंटू L. सो S इंटू L. सो R मुझे चाहिए. सो R इज इक्वल टू क्या करूँगा, S इंटू L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L. सो दिस इज द रिजल्ट. 1 करना चाहो 1 कर दो. नाउ दिस इज गिवन. इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सब कुछ गिवन है, और S जो है दैट इज 12.5 है. ओके, S और L1 जो है मेरे पास. सो द L1 दैट इज योर लेंथ, एंड द लेंथ इज ऑल्सो गिवन टू मी फ्रॉम A. लेंथ दे दिया था हमें, कितना दिया था, फाउंड टू बी 39.5. सो दिस इज 39.5 एंड दिस इज 100 माइनस 39.5 एंड यू कैन गेट योर वैल्यू ऑफ R फ्रॉम हियर. सो यहाँ से मुझे R आ जाएगी. Now, why are the connections between the resistance of the Wheatstone bridge or meter bridge made up of thick copper? Thick copper. Now, look at this. You have made it with a thick copper, right? Point to be noted, right? Thick copper means, you know, R is equal to rho L by A. So that means it is very simple. Okay, that means I can say my R is inversely proportional to A. And this A is inversely directly proportional to R, because R के साथ radius के साथ ऐसा होता है. But you can neglect this. You can straight away say from here. So what happens when you make it thick? You increase R and your cross sectional area increases. Inversely proportional होने की वजह से resistance घट जाती है. तो यही कारण होती है कि resistance को कम से कम करने के लिए, right? Resistance को कम से कम करने के लिए हमें उस तार की क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ानी पड़ती है, और उसको वो तभी बढ़ सकती है जब आप रेडियस को बढ़ाएं. तो रेडियस को बढ़ाएंगे, मोटी हो जाएगी तार, और रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी. इसलिए उसको हमेशा मोटा रखा जाता है, थिक, मेड अप ऑफ थिक वायर्स. ओके, ऑलराइट. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एक अच्छा बात है. ओके, सो व्हाई आर द कनेक्शंस मेड? सो दिस इज कॉल्ड क्लियर. Determine the balance point of the bridge above if R and S are interchange. Okay, so अब मैं R और S को interchange कर दूंगा. अब मैं R और S को interchange कर दूंगा, लेकिन उस चीज़ को करने के लिए मुझे R चाहिए पहले. So if I refer to book, my answer for this R is, this is 10 point. What is this question? This question is 3.10. So if you go to 3.10 का solution, अगर मैं 3. that is 8.16, you will get it as 8.16 ohms. So 8.16 ohms आपको मिलेगी, right? Okay. Now, I am now interchanging it. Now, if you interchange, now देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. So हमेशा मेरा ये चीज़ होगी. Okay, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज. So this is S now, and this is R now. So R will come with this, S will come with this. So simple logic. So now S will be multiplied with 100 minus L1. And that will be equated with R into what? Sir, L1. और अब मुझे क्या चाहिए? L चाहिए, because R और S हमको पता है. So just you calculate this S 100S minus S into L1, that is equal to R into L1. So that is 100S is equal to, अगर मैं L1 को कॉमन ले लेता हूँ, तो that is R plus S, and therefore L1 is equal to 100 upon R plus S.
Now look at this. It's 100 upon r plus s. So this is the result. R और s हमको पता है, तो just you try to solve it. ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा. एक बार कैलकुलेशन देख लूँ मैं. 100s है ये. So this is 100s. I'm sorry. इधर में मैं लेके गया L आ गया, तो this is 100s. So 100s है ये. तो 100s के साथ. So just put it over there. You know what is s? So 100 into s. So s हमारे लिए क्या था? s हमारे लिए था 12.5. So s हमारे लिए था 12.5 और नीचे r plus 5. So 12.5 और अभी हमारा कितना निकला है? 8.16. Just get the result and you will get your L. But this L is from A. So don't forget whatever the answer is and you write it from there. Write it there from A. So from A जरूर लिखिएगा and you will get your answer. Right? From A. Clear? और ये कुछ आंसर आएगा, अगर चेक कर लीजिएगा. अगर मैं इसको देखता हूँ तो this will come out to be as 60.5. So this will come out to be as 60.5. Right? तो एक बार जरूर इसको चेक कर लीजिए. ओके, सो आर इनटू दिस करेक्ट. फाइन, तो इसको ऐसे ही कीजिए. राइट, थैंक यू.